Hello everyone. Hello everyone. Good morning to all. So guys, how are you all? And please mate clear kari diyo audio video clear achhe nahi. Audio video clear? Very good. Give me a minute start kariba class. आज session रहुची computer ऊपरे. Okay. आपण मान जेमति जानि चंती Monday, Wednesday and Friday मोर session रहुची. Monday आमे देखुचे तो first general science, then देखुचे EVS, then आमे देखुचे computer. Okay. Okay. प्रणाम झरना प्रणाम. गुड मॉर्निंग ज्योतिरंजन. सो लेट न करिकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करिया. ओके सो गोटे मोटिवेशन कोट रु तम क्लास स्टार्ट करूची. द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे. लाइक समस्त आमे जानिचे आमे एबे जहा भी करूचे तार परिणाम आमे दिने ना दिने पाइबा. सो बेटर कि आमे जदी भलो काम करिबा दैट मीन्स केवल स्टूडेंट्स मानक पई अछि. आमे जदी भलो टाइम वेस्ट न करिकी आमे जदी भलो से पाठ पढिबारे टाइम पास करिबा अलगा कोठी टाइम पास न करिकी ताहाले हम फ्यूचर ऑलवेज ब्राइट. ओके सो start the class. Guys, the first question is, tell me the full form of RAM is. Tell me what is the full form of RAM. Is that random access memory? Is that read access memory? Is that read only memory or run access memory? Tell me. Good morning, very good morning Sibajyoti. शिवज्योति पुण्यमयी मु तुमको आगुरु जानी छी कि आई मीन तमे आगुरु क्लास करिचो या फिर पर्सनली मु जानी छी तम नाटा टिके नोइंग लागु छी मते. दैट्स व्हाई. ओके एनीहाउ सो यस राइट आंसर इज व्हाट. Yes, all are giving random access memory. They are absolutely right. Okay, so the full form of RAM is random access memory. So RAM टा देखिबा को किछि कंप्यूटर भितरे आपण मेमोरी चिप रो उठे थाए ए टाइप रो तार स्ट्रक्चर थाए. इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज दैट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल मी. द ROM stands for random only memory, read only memory, read optimal memory or run only memory. Yes, all are giving right answer. मते ये question answer दियो. What is the full form of ROM? गोटे random access memory and yes, आ गोटे कौन रही छी? This is read only memory. And तार किछि इमेज एई टाइप रो होची. This is कोन random access memory एई टाइप रो थिला. But read only memory जोटा हमर ROM तार एमिति किछि गोटे पानिया टाइप रो गोटे गोटे सुता सुता हेकी थाए. ओके एल्युमिनियम रो. नेक्स्ट देखो. Which memory is volatile? Tell me volatile. Like जदी आमे देखुचे मेमोरी केते टाइप रो होची volatile and non volatile. From the below options, tell me which is the volatile memory. Tell me. Is that ROM? Is that hard disk? Is that RAM or flash memory? Yes, गंगाधर आज क्लास रे अच्छो ताहले. चंदन स्वाई बाबरे तमे तो ईद का चांद ही जाउचो. ओडिशा भी आज क्लास रे कथा कोन समस्त पूरा क्लास रे पूरा टिप टॉप. हाँ यस. सो कौन हबो
This is RAM. RAM is a volatile memory. Let's see. So volatile and non-volatile memory, what is that? Oh, sorry, what are those? Memory inside a computer falls into two categories. Okay. Now one is volatile memory, another is non-volatile memory. Okay. So volatile memory is what? This type of memory loses all of its data when the power source is turned off. जेतेबेले पावर आमे पीसी रा ऑफ करि दोचे जहा भी डेटा थिबो सेटा कोन हबो ना ऑटोमेटिक इरेज हे जिवो. ओके, इरेज हे जिवो. बट नॉन वोलेटाइल मेमोरी कोन? That this type of memory will retain all the data when it loses its power source. Okay, this type of memory will retain all the data when it loses its power source. So power off hela pore bi se amar access kari ki jetiko data thibo taku rakhuchi amar store kari ki. Okay, so RAM, cache, registers are kona? Volatile memory, non volatile. Solid state drivers, hard disk drivers, read only memory, USB sticks are kind of non volatile memory. Clear? Yes guys. Okay, next देखो, which is the largest unit of memory? Tell me, these are the options. This is KB, MB, GB or PB. Kilobyte, megabyte, gigabyte or petabyte. Tell me, सबुठु largest unit कोटा रहिबो हमर memory रा? Yes, answer दियो. शिवज्योति, answer दियो. Yes, so this is the right answer will be PB, that is petabyte. Some descriptions are there. Symbol जदि देखंतु कोन कोन अछि जेमति 1 bit को हमें केमिति फुल फॉर्म करछे ना बाइनरी डिजिट एंड तार क्वांटिटी को हमें केमिति 1 सेल बाइनरी 0 और 1 रे कोन तार क्वांटिटी को हमें चेक करूछे. सेमिति बिट्स अछि एंड 8 बिट्स 4 बिट्स मिसी कि 8 दीटा 4 बिट्स मिसी कि 8 बिट्स सेमिति 1024 बाइट होउची. किलोबाइट इज 1024 किलोबाइट. तो तार टोटल टा आपनकर अछि केमिति तार फुल फॉर्म कोन रहउची तार क्वांटिटी कोन कोन रहउची. You can have a look. Okay. Yes, guys. Next question देखो. Which storage device has no moving parts? Tell me, which storage device has no moving parts? Is that HDD? Is that SSD? Is that CD-ROM or floppy disk? कौन कहूची ना no moving parts. को स्टोरेज डिवाइस रो गोटे मूविंग पार्ट्स नहीं. टेल मी 25 क्वेश्चन आंसर दिया समझते. झरना, शिवज्योति, ज्योतिरंजन आंसर दियो. ओडिशा एंड गंगाधर. So yes, right answer. Yes, this is what? This is SSD. Okay, let's see something about this. So hard disk drive amar hochi kon HDD jota and SSD jota rahuchi. Hard disk ra kon hochi? This is inexpensive. Okay, tons of storage achi amar kouti na HDD re. Vulnerable to shock and magnetic slower data transfer. But SSD re amar kon sabu jinsa tike fast and way achi. Like this is solid state drive, the full form of SSD, solid state drive. And hard disk drive is the full form of HDD. Okay, so this is hyper fast data transfer, no moving parts. Mone rakhithibo, SSD has no moving part, and this is non-expensive is our HDD, but SSD is very expensive, and this is smaller storage. HDD रे कोन हमर लार्जर आमे गोटे स्टोरेज पाउचे, किंतु SSD रे ताकू जदि कंपेयर करूचे कहा सहित ना HDD सहित तार स्मॉल स्टोरेज टिके कम अछि. ओके, यस गाइज. नेक्स्ट देखो, which of the following is an input device? Tell me, below are the options. This is printer, scanner, monitor or speaker. Which of the following is an input device? Tell me. आपको लागुथ मैम सबुटा तो इनपुट डिवाइस, बट ए भीतर ऑड वन आउट केमिति करिवु? आंसर दियो, देन विल से यू. ओके, गिव मी द आंसर. Which of the following is an input device?
yes. So scanner कौन रहुची ना हमरो kind of input device, but printer, monitor, speaker all are what na these are the output device. Okay, let's see some input and output device. Input device kaha को हमें कहिबा those devices which are used to give data and instruction to the computer is called input device. But what is output device, guys? Those device which are used to produce result of data processed. आमे जते बेले गोटे डाटा इनपुट करूचे त डाटा प्रोसेस रे जो रिजल्ट बाहरुची आर कॉल्ड एज व्हाट आउटपुट डिवाइस. फॉर एग्जांपल मॉनिटर नहीं परिबो, प्रिंटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड एंड द वीडियो कार्ड. Okay, these are the options of input device and the output device. Okay, clear? Yes, Gangadhar, samaste right coach. Okay, next question answer diyo. A device used to display output is, a device used to display output is what? The options are scanner, monitor, keyboard or joystick. एबे कहिथिली आउटपुट डिस्प्ले करिबा पई आमे कोउटा डिवाइस को यूज करूची. आंसर दियो. कौन हबो? Yes, this is what ना monitor. Monitor is the output device and हमें display करिबा पई जो output device को use करूचे, this is monitor, our PC. So output device आपण माने monitor को नहीं परिबे, printer को, microcells and plotter and the multimedia projector को नहीं परिबे. Okay, next देखो. A joystick is mainly used for, joystick आमे कोथि पई यूज करूचे. What is joystick and ताकू mainly कोथि पई यूज करूचे? Typing पई, gaming पई, printing पई और scanning पई. Typing पई आमे keyboard को यूज करूचे. Okay, joystick रो तो यूज होउनी. Printing पई printer रे यूज होउची. Scanning पई scanner रे यूज होउची. So odd one out. कोटा left रहिला. Tell me the right answer. 28 number. Okay, 28 number answer दियो. Yes, for the gaming purpose. So let's see what is joystick is actually. देखो, joystick is a device which is commonly used for what? Used for playing video games. Joystick is mainly used to control the speed of cursor and is thus popular in games involving speed like racing and flying games. So आपण माने कहि एस्प्लेनेड रे हमर गेम जोन अछि, जेते सब मॉल अछि, कनिका गैलरी हैला, डीएन हैला, त हमर कोन गेम जोन गोटे गोटे अछि, सेथिरे आपण माने जाई के भी गेम खेलिथिबे, जो माने भी खेलिथिबे से माने प्रैक्टिकली देखिथिबे. तो जॉयस्टिक कोटा होची हम जो गेम जोन ने गेम खेलुचे, सपोज रेसिंग गेम खेलुचे. ओके, सेथिरे कोन एटा को हम कंट्रोल करूचे, जेमति हमर माउस रे कर्सर थाए कंट्रोल करिया पे हमर पैनल को. तो एटा हमर केमति हुए ना, नथिंग बट जॉयस्टिक इज ए कंट्रोल ऑफ द एनी गेमिंग जोन. ओके गाइस, yes, simulation purpose रे भी हमर यूज हुए. So digitizing table कौन कहूची? Features, it is an input device used primarily to input drawings, sketches, etc. It is used for computer aided design, that is card. Card रे भी हमर कौन यूज हुए? नाई joystick यूज हुए. This is also can be an important question for you all. Okay, so it consists of two parts, electronic table and pen. Dita thae, this is the electronic table part and this is the pen part. Okay guys, next dekhiba. Now tell me, which of the following is not an output device? Input device कहली कोउटा, output device भी तमु कहली. वर्तमान तमे without any second thought मते आंसर दियो. Which of the following is not an output device? Is that printer? Is that monitor? Is that mouse or it is speaker? Kwa? Yes, this is what? This is mouse. बाकी printer हैला, monitor हैला, speaker हैला, these are what? The कौन output device.
बट माउस गोटे कौन ना आउटपुट डिवाइस नहीं, दिस इज इनपुट डिवाइस बिकॉज माउस रे हमें कौन करूचे क्लिक करूचे जो इनपुट करूचे आउटपुट तो किसी बाहर करने ना. ओके वेरी गुड ओके. तो examples of output device कौन होची monitor, printer, speaker, plotter, LED display and projector. बार बार ठीक है मन पकड़ लिया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया a light pen is used for what purpose? For the scanning, for drawing on a screen, or for printing, or for measuring temperature. एबे जस्ट मु जॉयस्टिक कहला बेले तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन करिछि. एटा भी सेकंड थॉट बिना मते को आंसर. ओके विदाउट एनी सेकंड थॉट मते यार आंसर बिकॉज़ ऑलरेडी मु तुमको कहि देछि जॉयस्टिक रो दीटा थाए गोटे कोन अछि सरफेस थाए एंड गोटे पेन थाए. सो पेन टा को पर्पस रे यूज हे पारुछि. Yes, very good. Those are giving B as the right answer. They are absolutely right. So drawing on a screen is the right. Okay. So light pen रा use कौन होची ना drawing on a screen. How it works? Light pen. It is a wave related to the computer via UPS. Via what? UPS, and the registry to move it on this board, and the computer senses the movement of the pen carefully and very sensitively. Okay, it is very sensitive also. Next देखिबा. Yes. Yes, Jhanna, very good. Next question answer दियो. Which software runs the computer hardware? Tell me, को software जे कि computer hardware को run करूची. And the options are application software, operation system, utility software, or this is programming language. Tell me. What will be the right answer? 31 question answer दियो. Which software runs the computer hardware? बहुत ही like लागुची ना question टा ही बहुत मजादार. Okay. So computer hardware को जो software हमरो कौन करूची operate करूची runs करूची सेटा कौन हबो? Yes झरना. झरना आउट के भाभी के आंसर दियो. Jyotiranjan giving the right answer. Siva Jyoti also giving the right answer. Yes, this is what? This is operating system. So without having a OS in the computer cannot run. Okay? This is operating system. So hardware and software or the difference जानी पारुथुबो. Software को Microsoft हेला, Google हेला, हमारा Word, Excel, PowerPoint, anything. These are the software. And hardware हमारे जेते सबु जॉइंट होची जो पार्ट्स रहिला. सपोज माइक हेला या फिर हमर स्पीकर हेला, मॉनिटर हेला, कीबोर्ड हेला. These all are software. Very good. Next question answer दिया. The main function of an operating system is. Tell me, the main function of an operating system is what? Is that creating documents? Is that managing hardware and software resources? Is that editing images? Is that designing web pages? Tell me. Answer diya. The main function of an operating system, the main function of an OS is what? Creating documents, managing hardware and software resources, editing images, designing. देखो तो editing, designing तो OS रा काम ही नहीं. Creating documents भी कौन OS रा काम नहीं. So rest कोड़ा रहिला. Yes, कोड़ा रहिला. This is manage करूची hardware and software resources को हम computer. Okay? कहाँ रा ना OS रा काम. So function of operating system is what? File management, device management, all the management that can do by the OS only. Okay? Process management, job management, memory management. जेते कहिला management आसी जिवो relate करि दबो direct OS सहित. Yes, managing hardware and software. Very good, Jhanna. Next question. Which of the following is an example of an operating system? Now tell me. या भितरु कोटा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रा एग्जांपल इज दैट MS Word, Google Chrome, Adobe Photoshop or Linux. Tell me. झरना एंड शिव्यज्योति ही अटेंटिवली क्लास करूचंदी बाकी सब कोन करचो रे
ऑन कर देगी क्लास सोई पड़ीच अच्छा ज्योतिरंजन भी अच्छा क्लास हाँ तमे 3 जण ही क्लास करूछ ना कौन सो दिस इज लाइनक्स yes very good this is linux so operating system कौन होची linux but ms word हैला google chrome हैला adobe photoshop एउडा सब कौन होची हमरो सॉफ्टवेयर ओके नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड हैला जदि ऑप्शन रे एंड्रॉइड भी थिबो ताहाले भी राइट आंसर देन iOS हैला फॉर एप्पल नो देन लिनक्स हैला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैला these all are the operating software okay that is OS next question the first GUI based operating system was tell me GUI stand for graphical user interface okay so the first GUI based operating system was what is that Windows XP is that Linux is that Mac OS or DOS tell me कोटा have a right answer the first graphical user interface based operating system was कोटा थिला tell me number 34 answer comment section रे दियो कौन भाबिया को पड़ुची हाँ this is Mac OS first graphical user interface based operating system हमर कोटा थिला ना इटा थिला Mac OS okay next question answer देखिबा so this is the graphical user interface start हेतिला कोथिरु ना Mac OS next देखो an operating system stored in ROM is called an operating system stored where in ROM is called what network OS real-time OS OS stand for the operating system okay embedded OS or the virtual OS fast operating system stored in ROM ROM is stand for read-only memory you all know that okay so mate kuha which will be the right option which will be the right option yes tell me this is embedded OS an operating system stored in ROM is called कहा कौन कह जिवो जोटा ROM रे जो operating system हमर store हेकी रहउची by default एटा सब कंप्यूटर रे store हेकी थाए तो कौन कह जिवो ताकू ना embedded OS ओके एमिति मन रखिबो embed हेकी रहउची that's why we call that embedded operating system okay so where is the operating system stored first a small part is stored in ROM okay the part which tells the machine what to do when it is first switched on कोन bootstrap loader बोली ताको कहै first switch on करा दिबो तापर switch on होला परे कोटा होम पेज ओपन हबो कि कोन हबो तो होम पेज जो ओपन हे कि रहउची सेटा कहा द्वारा इंस्ट्रक्ट होउची ना फर्स्ट जो छोटो पार्ट गोटे रोम रे हमर रहउची नेक्स्ट होउची द रेस्ट इज स्टोर्ड ऑन डिस्क and loaded into RAM okay तो RAM ता हमर कोन ना रेस्ट जो अमाउंट रहिला तो सपोज 30% या फिर 20% हमर रहिला रोम रे रेस्ट 80% रहउची कोठी ना RAM ओके वंस द कंप्यूटर स्टार्ट्स अप हमर कोन RAM रे जति थिला मेमोरी सॉरी जति के स्टोर हे कि रहिथिला रेस्ट हमर चलिबो देन सम इज स्टोर्ड ऑन डिस्क ओनली लोडेड इनटू RAM जोटा भी अगेन RAM रे ही रहि गेला किछि पार्ट ओके नेक्स्ट देखो no worries class करूछ attentively that's make me really happy okay which type of software helps to perform specific tasks like document creation tell me which type of software helps to perform specific tasks like document creation is that system software is that application software is that utility software or this is firmware tell me which type of software helps to perform specific tasks like document creation so document creation specifically गोटे software द्वारा हुई से software टा कोटा हबो कुहा yes right answer will be very good Jyotiranjan again answer दियो
कॉपी करनी जो मान को भी आंसर जणा नहीं एक्सप्लेन मु करूची स्टे ट्यून फॉर द एक्सप्लेनेशन बट आंसर दियो पार्टिसिपेट कर जीत भाई एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ठीक अच्छे जीत भाई ओके ज्योतिरंजन एंड जीत भाई एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर दोसंती राइट चलो तांको सहित ही जीबा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर हैला सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर गाइस कौन रहउची ना वन इज एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर अनदर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कौन कहउची एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर created to allow the user to perform specific job or task okay जे कि allow करूची परफॉर्म करिबा पई स्पेसिफिक जॉब पई या फिर टास्क पई बट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन करूची these are the computer software responsible for the general operation of a computer system including the including the operation of hardware running application software and the file management एंट्री एग्जाम रे तुमको पक्के दे पारे कि को ऑपरेटिंग सिस्टम और को सॉफ्टवेयर ओके को सॉफ्टवेयर हमर रिलेट अछि कहा सहित ना एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और फाइल मैनेजमेंट सहित कोटा कहबो दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जॉब प्रोफाइल पे जदी आसिला जॉब रिलेटेड और एनी टास्क जोटा हमर करूची के करूची ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करूची क्लियर नेक्स्ट देखो वेरी गुड झरना शिवज्योति वेरी गुड नेक्स्ट Linux OS is an example of Linux OS जोटा कि हमर गोटे काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोटा थिला Linux सो इटा हमर एग्जांपल कोथिरो दिस इज ए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर proprietary software or this is freeware टेल मी एग्जाम रेटा बहुत थरो क्वेश्चन ने पचारुची आइदर देखंतु एमिति पचारिबो कि टेल मी एन चारटा ऑप्शन देई दिथिबो पचारिबो टेल मी और गिव मी द राइट ऑप्शन व्हिच इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोटा दबो ना Linux दबो ओके सो Linux is what this is nothing but a open source software okay guys yes Shana yes we are going right okay no worries next so what is Linux guys first of all Unix like computer operating system कौन Linux is a computer operating system जीत भाई you are not thinking you are thinking rightly in a right way you are thinking how can you think so much right so particular मते भी टिके तमटु गाइड नेबार अछि एते राइट केमते थिंक कर परछ so one of the most prominent example of free software and open sources development underlying source code can be freely modified used and redistributed by anyone originally only ran on 86 processors okay starting रे 86 processor रे ran होतला बट एबे तारा अपग्रेड हे गला okay so free and जोटा हमर open source कोटा रहउची operating system this is Linux clear okay next चलो जीत भाई welcome which software is used for virus detection tell me which software is used for virus detection compiler utility software word processor or spreadsheet virus detect करिवा पई आमे को सॉफ्टवेयर को यूज करूचे जल्दी जल्दी वेरी गुड एते खुशी अच्छा त खुशी रे कोन दबो कोन कहू छ लस्सी गोटे हे जाऊ ना कोन को which software is used for virus detection is that compiler is that for utility software is that for word processor or this is spreadsheet yes answer diyo very good Jyotiranjan yes virus detect करिया पे आमे जो सॉफ्टवेयर यूज करूचे पिले माने सेटा कोन होबो this is nothing but the utility software okay this is utility software and आमे केमिति एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जहा भी गोटे अपलोड करूचे
प्रोसेस कौन होची फर्स्ट इफेक्टिवनेस इन मालवेयर डिटेक्शन ताको चेक करूचे फर्स्ट द कंसीडरेशन फॉर चूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फर्स्ट कंसीडर करूचे को टाइप रो वायरस हमको अटैक करिछि ता पई हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को चूज करूचे देन ताको इफेक्टिवनेस इन मालवेयर डिटेक्शन केते की इफेक्टिवनेस तार रहिबो ताको चूज करूचे अगेन सिस्टम कंपेयर हम पाखरे जो सिस्टम अछि ता पई से कंपैटिबल हबो कि नाही ताको भी हमें चेक करूचे अगेन इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस ऊपर कौन तार इम्पैक्ट पकेइबो देन एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स एंड द ease of use and user interface the customer support and help resources and the again end रे हमें चूज करूचे प्राइसिंग एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स एत्ती की चेक करूचे देन हमें जाउचे ताको परचेज कर ओके वेरी गुड नेक्स्ट चलो now tell me ms dos is an example of tell me ms dos is an example of what is that GUI graphical user interface based OS or single user OS or multitasking OS or real time OS so ms dos ता हमरा कोन हबो tell me yes शिवज्योति शिवज्योति तो फुल ना कौन शिवज्योति और शिवज्योति आई थिंक शिवज्योति पुण्यमयी टाइटल नहीं हां बट नाटा तमरा बहुत यूनिक लागुची बुझिला एकदम यूनिक ना आज तमरा सो कौन हबो ना एमएस डॉस अछि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मन रहिबो व्हिच इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन जदी एमएस डॉस थिबो विदाउट एनी सेकंड थॉट राइट क्लिक कौन करिवो ना एमएस डॉस ओके नेक्स्ट सो व्हाट इज एमएस डॉस दिस इज a application program then resident system program again like types of asuchi okay one the application program then application program under re kon asuchi resident system program ta under re kon asuchi na rom bias drivers then amara application program under re amara ahuri kon asuchi na this is rom bias drivers joda ki ms dot layer structure these all are okay these all are बहुत ही भलो नाटा हेची बुझिलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो विंडोज मैक ओएस एंड लिनक्स आर क्लासिफाइड एज विंडोज हेला मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हेला और लिनक्स हेला दिस ऑल आर द कोन काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोर एटा क्लासिफाइड हेची क्लासिफिकेशन करा जाईची कहा अंडर रे एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर as a system software as a malware as a debugging tools tell me the right answer guys tell me the right answer answer the right answer della re okay yes so what will be the right one is the what this is system software okay next chalo Windows versus Mac versus Linux हमर कौन होउची Windows users are different जो माने के कोन have to be patience जा पाखरे टिके पेशेंस अछि से माने Windows यूज करिवे आ जो माने obviously recent money पावा जा पाखरे अछि से माने कोन Apple यूज करिवे आमे तमे तो यूज करि पारिबानी जॉब फॉब कॉलेज माने क्रैक करि दियो देन आमे भी गोटे Apple धरि के देखिएबा कि अरे आमे भी एबे पैसा वाला हे गले ना कोन so Linux user जा पाखरे स्किल अछि they can use the Linux okay these are the affordable range for everyone okay guys next dekho sorry which language is directly understood by the computer
कंप्यूटर ओन लैंग्वेज कोटा भाई मोर रीजनल लैंग्वेज हला कोन ओडिया आपण मानकर भी रीजनल लैंग्वेज एज फार आई नो ओडिया ही हेइथिबो जदि भी को माने नॉन ओडिया थिबे से मानकर हिंदी थिबो या फिर किछि भी थिबो सेमिति कंप्यूटर रीजनल लैंग्वेज कोटा कंप्यूटर डायरेक्ट लैंग्वेज कोटा टेल मी yes कोटा हबो which language is directly understood by the computer कोटा is that high level language computer can easily बुझी जाए or machine language or assembly language or the object oriented language which will be guys आंसर दियो yes कौन सब मजा कलनी okay so this is machine language which language is directly understood by the computer na machine language because computer itself है कौन machine so से तार language ही बुझी परिबो थोड़ी ना हमें जाको ओडिया रे की हिंदी रे इंग्लिश रे कहले से बुझी परिबो से तार machine language that is binary language रे से बुझी परिबो okay so what is machine language machine language is the only language that is directly understood by the computer it does not needs any translator or program okay any translator program ro requirement not thae se directly machine language बुझी पारे so the only advantage is that program of machine language run very fast जदि आमे ता सेम लैंग्वेज रे ताको दोउचे देन से बहुत फास्ट हमको कोन हमरा आउटपुट प्रोवाइड ओके गाइस यस नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अछि C Java and Python are examples of C hela C++ hela Java hela and Python hela are the examples of what tell me is that machine language is that high level language is that assembly language or system software कोटा हबो C hela C++ hela Java hela Python hela मेरा कहार गोटे एग्जांपल दोचे आमे जो कोर्स करूचे कहार एग्जांपल दोचे yes very good so these all are कौन ना high level language तो ए कोर्स रे हमें कौन एक्स्ट्रा ऐड ऑन करी की हमर इंक्रीमेंट रे ही हमें तर बेटरमेंट करे पारुचे कि नहीं yes high level language yes very good so Java versus Python versus C++ कौन ना choose for programming language हला easy learning पई कौन जाउछि हमरो ना Python जोटा कि simplicity and readability Python करि पारुछि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जदि हम देखुचे बेटर परफॉर्मेंस हमहु के प्रोवाइड करूची ना C++ प्रोवाइड करूची बट एप्लीकेशन डोमेन करूची जते सब हमें अदर एप्लीकेशन को यूज करूची हम कंप्यूटर रे ताकू डोमिनेट करी रखुची ताकू के भलो से यूज करि पारुची स्मूथली रन करि पारुची दिस इज जावा ओके गाइस दिस इज जावा नेक्स्ट नाउ टेल मी द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज the first high level programming language was what is that Java is that C++ is that Fortran is that COBOL tell me कोटा हबो को the first high level programming language was कोटा थिला Java, C++, Fortran और COBOL Java हो C++ हो COBOL हो ए माने बहुत ही लेट रे आसी थिले बट अर्ली स्टेज रे की हमर थिला दिस इज Fortran थिला ओके फर्स्ट आस्तिला की ना Fortran आस्तिला ओके लेट्स सी so what is Fortran और फॉर्मूला तार फुल फॉर्म देखो फॉर्मूला ट्रांसलेशन was the कोन फॉर्मूला and this is for the translation was the first high level programming language software invented by कहा द्वारा ना जॉन बैकस कहा द्वारा जॉन बैकस फॉर IBM फर्स्ट किए करितिला ना एटा हमर इन्वेंट हेतिला
आईबीएम रे यूज करिया लागि फर्स्ट आईबीएम पई यूज हेतिला जोटा कि 1954 बाय जॉन बैकस and released commercially in 1957 first use हेतिला कहा पाए आईबीएम रे then commercially use हैला जोटा कि परचेज करिया पाए मार्केट को अवेल करेइले 1957 and Fortran is still used today for programming scientific and mathematical applications. Clear? What is Fortran? केबे launch हेतिला like केबे हमरो invent हेतिला and कोठी पाई हेतिला later ना commercially केबे purpose रे हम use कले everything is clear guys? Very good. Next, a compiler is used to tell me a compiler is used to execute a program, convert code into machine language or debug errors in a program or manage system files. Tell me. Clear? Okay. So a compiler is used for what? Compiler is used to what? Execute a program पाई हम यूज करू छे compiler किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करिबा लागि और कन्वर्ट करिबा लागि कोड को इनटू मशीन लैंग्वेज रे और डिबग एरर्स इन ए प्रोग्राम और मैनेज सिस्टम फाइल टेल मी guys tell me what will be the right option yes this is for converting code into machine language yes this is for the converting code into machine language kahar kama na compiler ro kama okay mane rahibo first c रो relate कर दबो ना कोन करूची c for the convert करूची कोन करूची ना convert करूची कहा को ना machine language m अछि for machine language okay l भी अछि m for machine कर दबो and l for language कर दबो clear next so suppose this is a code okay then compiler रा काम कोन करछि ना ताको गोटे टारगेट कोड रे that means machine code रे ताको convert करूछि जेमिति कि इजी हबा कंप्यूटर को to read and provide us a output data एग्जाम रे कोन एते इजी क्वेश्चन आसीबो आमे स्टार्टिंग करूचे ना आमे धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट लेवल को जाउचे ऑल ऑफ सडन जदि आमे मॉडरेट लेवल करिबा त पिला भी कंफ्यूज हेजिबे कि कोन खाली एते कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीबो हैव पेशेंस आमे जाउचे ओके एबे तो मात्र 4टा क्लास हेछि ना 3टा क्लास हेछि कंप्यूटर टिके पेशेंस रख आसीबो यस नेक्स्ट देखो which programming language is widely used for web development tell me which programming language is widely used for web development first web development ପାଇଁ को language use हेतिला python java javascript c++ first नाही widely कोडा use होउची till now okay widely कोडा को एतिकी accept करिसंती till now को आसिले इजी बढ़िया होंता भाबिनियो आसी गला पुण्यमयी तमे कहिला माने भाबो एटा एग्जाम रे आसी गला हैला तमरा डायरेक्ट तम नाटा एते सुंदर हेची तमरा डायरेक्ट रिलेशन अछि ना मां सरस्वती को सहित तो तमे कहिला माने जानछ ना नै दिने ना दिने लाइक होल डे भितरे गोटे थरा मां सरस्वती हम कंठरे बसन तो कोड नो तमे एबे जो कथा कहिलो एटा मे भी सत्य ही पारे सो जहा भी कहूछ होल डे रे ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड तम पार्टी रु जहा भी वर्ड्स बाहरुची गाइस बी पॉजिटिव ओके स्टे पॉजिटिव so the right answer will be javascript okay the right answer will be javascript so first which programming language is widely used easy all over world this is javascript so uses of javascript कौन रहुची no first देखो web development ପାଇଁ तारे यूज रहुची web applications ପାଇଁ भी तारे यूज रहि पारुची front end development ପାଇଁ server applications ପାଇଁ back end development ପାଇଁ web servers ପାଇଁ games ପାଇଁ art ପାଇଁ smart watch हम जे smart watch भी लगौचे तारे जो applications अछि that's also under the javascript program
Okay, then mobile apps hela, data visualization hela, and the API development. So everything under what? Namara JavaScript. Okay guys. Next देखो, what does URL stand for? What does URL stand for? Give me the full form of URL. This is Uniform Resource Locator, Unified Routing Language, Unique Resource Link, or Universal Reference Locator. Tell me guys, what is the URL stands for? URL ର full form कौन रहिबो? Yes, very good Jyotiranjan. Yes, जीत भाई. मैम ग्लास रा पीडीएफ कोठी मिलिबो? ग्लास रा पीडीएफ मिल परिबनी. ता पई तुमको गोटे काच ग्लास टाणी मते देबाको पड़िबो. देन जाई कि मु पीडीएफ देबी. एइडा रहला हमर कंडीशन हैला. मते गोटे ग्लास देले जाई कि मु पीडीएफ देबी हैला. नेक्स्ट कौन हबो ना? दिस इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, सो क्लास रा पीडीएफ गाइस हमर सबु एंड क्लास रे आपण मन को लिंक कोटे पिन ऑफ हे जिवो. सेठी आपण को टेलीग्राम ग्रुप रा नाम मिलिबो. सेठी आपण को जॉइन करिया को पड़िबो. सेठी आपण को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जिवो. ठीक अछि, ठीक अछि. गोटे मिनिट मु तमन को बस कहि दउ छी कि तमन जति चाहिबो देन स्टडी आईक्यू पई सपोज तमे गूगल क्रोम को गलो. गोटे मिनिट, just a minute guys. First you have to choose the StudyIQ. Give me a minute guys. Something error is occurring. तो फर्स्ट तुमको StudyIQ क्रोम रे जाई कि सर्च करिबार अछि. StudyIQ OPSC भी क्लिक करि परिबा डायरेक्ट. ओके, so after clicking the StudyIQ OPSC, so first देखो ओडिशा पीएससी रो जते सब बैच अछि आपण मन को आसी जिवो. सो गोटे गोटे करी के हमर न्यू न्यू बैच आसुची जोडा भी तमरा डिस्काउंटेड प्राइस रे तमे अवेल करि परिबो. बहुत सारे बैच हमर ऑलरेडी आसी की अछि. तो सपोज देखो एटा गोटे हमर एटा नाही, गोटे मिनिट एठी जाई कि तुमको ओपीएससी चूज करिया को पड़े. ओके, ओपीएससी चूज करलो. देन एठी प्रगति बैच 2 आसी जाउची. ओके, देन प्रगति बैच 2 को सपोज गलो, फाउंडेशन बैच 2 लॉन्च हो जाइची एंड पूरा फंडामेंटल बैच आसुची. पूरा डीपली तुमको पढ़ा हबो, पूरा डेप्थली पढ़ाई कि तुमको एवरीथिंग क्लियर करा हबो. पीवाईक्यू भी हबो, एमसीक्यूज भी हबो. गोटे गोटे पिलांगर डाउट क्लियर सेशन भी हमर रहइबो. किछि भी तमरा प्रॉब्लम रहउची ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तमरा पर्सनल लाइफ रे किछि प्रॉब्लम अछि त तमे कोन प्रिपरेशन करि पानो ठीक से, एवरीथिंग तुमको मेंटरशिप मिलिबो. जो टीचर आपण मानन को पसंद समस्त को आपण को नै परिबे गाइडेंस. ओके, एमिति नाही कि आपण सपोज मो कोड एसएसपी लाइव यूज करिकि परचेज कले देन ओनली तमे मो द्वारा ही गाइड होबा. तेमिति नाही. टॉप एजुकेटर्स माने अछंती ऑलरेडी. शिवशंकर सर हमर अछंती, सरोज सर अछंती. 25 प्लस इयर्स तांकर एक्सपीरियंस अछि. बहुत पिला ऑलरेडी आईएसओएस पाई सारी चंती. तो तमे तांकर थ्रू भी जाई पारे. ओके, हाँ फनी तो मु तमर के लागिवो सत्य कथा कहले त माने मु फनी लागछि. हो तो गाइस ओपीएससी चूज करला. देन सेठी बैच आसीबो. ओके, प्रगति बैच 2. देन एठी 12499 आसुची. ताकू बाय करिवो. ओके, मोटा को रजिस्टर करिनी सेथि लागि तुमको देखेबनी. बट सेठी आपन को ऑप्शन आसीबो. आपन कोड मोर यूज करिवे एसएसपी लाइव. देन आपन को डिस्काउंटेड प्राइस से आराम से अवेल करि पारे. ओके, क्लास केते टाइम रे हमर 1 आवर क्लास रहिबो. एबे टाइम हे गलानी क्लोज हे पे. बट बिफोर दैट मु तुमको टिके
प्रमोट करदेली समस्त तो क्लास आरंभ रे प्रमोट करछन त माने एमिति रे बोर हे जिवो तो एंड रे करदेली तो तुम मानकु बेनिफिट लागुची क्लास यदि इफेक्टिव लागुची देन प्लीज डू जॉइन ओके नो प्रॉब्लम तो ओनली स्टेट पीसीएस रो नाही हमर अलगा बैच भी सब अछि जेमिति कि बहुत सारा वन डे एग्जाम पाई भी अछि प्रगति बैच अछि ओपीएससी पाई बट प्रारंभ हैला एंड मु तुम मानकु देखौ छि गोटे मिनिट ओपीएससी एसओ पाई देखो 2250 अछि ताकू बाय नाउ करिवो एटलीस्ट तमे सेही 1800 ऑलमोस्ट डिस्काउंट पाई की हे जिवो एसएसपी लाइव यूज को मारे कोड यूज करिवो देन तुमको 1800 टू 1900 भीतर किसी डिस्काउंटेड प्राइस मिल जिवो जोटा कि बहुत ही कम ताडू तळका केबे कम हिबोनी जदी भी आपण यूज करिया को चाहउछन जल्दी यूज करके मो कोड जॉइन करि जानतु बिकॉज़ ऑलरेडी बैच स्टार्ट हे सला काली ठू स्टार्ट हे गलानी जते लेट रे सपोज तुम भाबुछ जॉइन करिया पई बट लेट जॉइन करिवो ना लाइव सेशन उडा मिस करि जिवो रिकॉर्डेड तो तमे पाइ जिवो बट लाइव सेशन मिस करि जिवो ओके एनीहाउ कम टू द पॉइंट सो गाइस now tell me what does URL stand for what does URL stand for this is uniform resource locator next chalo what is uniform resource locator guys now URL stands for uniform resource locator and is used to specify address on the world wide web that is a URL is the fundamental network identification for any resource connected to the web example kon nabo na hypertext page hei paribo images hei paribo sound files hei paribo suppose images page option ne or images or sound suppose kon achi sound files is categorized under which resources or which locator URL then option ne तुमको अलग किसी option दे so कोटा right answer करिवो ना this is URL clear next चलो देखो the standard protocol used for wave communication is tell me the standard protocol thank you Jyotiranjan cool the standard protocol used for wave communication is what is that FTP is that HTTP is that SMTP is that SSH tell me the standard protocol used for कोथि पई ना वेव कम्युनिकेशन पे हमें जो प्रोटोकॉल को यूज करूचे समस्त जानि थिबा जते बेले हमें किछि सर्च करूचे कोन होउची http करके यूज करूचे ftp करूचे कि नो smtp करूचे कि नो ssh करूचे कि नो सो कॉमनली आपण माने जदी ऑड एंड आउट गोटे छोटो पिल्ला हेले भी जो माने मोबाइल यूज करूथिबो से माने आसी देखिबो कि ऑड एंड आउट कर दबो ओके सपोज एटे आउ कोन www अछि त मानु कंफ्यूज करिया पे नाही ना सो http कोन आराम से त माने क्लिक करिवो ओके गाइस वेरी गुड very good next question answer दियो अच्छा so 8 popular network protocol कौन अछि देखो one is http one is http/3 that is known as for the quick and https and the web socket tcp udp smtp and the ftp ओके कॉमनली एग्जाम रे जोटा आसुची हमर http ही मन रख बाकी एडा को टिके ओवरराइड कर देता बस गोटे नजर रे थाओ कि these are also the protocols okay these are the network protocols बोली गोटे माइंड रे थाओ बट मन रखो अबाउट http ओके गाइस एंड कोथि यूज हुए http फॉर द वेब ब्राउजिंग नेक्स्ट the full form of IP in networking tell me the full form of IP in networking so IP रो फुल फॉर्म कोन होउची आपण माने देखिथिबे हमकु पचारंती सपोज किछि आपनकर कंप्यूटर रे प्रॉब्लम हैला आपण माने जते बेले इंजीनियर को फोन करूचंती किछि हेल्प पाई किछि भी ग्लिच टेक्निकल ग्लिच आसी गला टेक्नीशियन कोन कहूची मैम आपनकर आईपी एड्रेस दियंतु देन हमें चेक करूछु कोन से एरिया रे नेटवर्क प्रॉब्लम अछि ना कोन आईपी एड्रेस दरकार होउची ना सो आईपी एड्रेस ता हमर कोन ए आईपी रो फुल फॉर्म कोन मते कहिलो वेरी गुड मते कुह आईपी रो फुल फॉर्म कोन होउची जीत भाई अच्छो तमे क्लास रे अरे बा लास्ट टाइम क्लास रे अच्छो जी हो कोन हैला ना दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल बट दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर द आईपी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
सो आईपी एड्रेस गाइस केमिति हुए एटा गोटे कॉमनली तमन को आनी मन रखिया पे हले एग्जाम रे न पढ़ी पारे बट तमन को जानिबा निहाती दरकार as per the general knowledge कोन होची फर्स्ट होची 1 byte that is 8 bits ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड रे कोन होची ना टोटल ऐड हे कि हमर केते रहउची ना 32 बिट्स रहउची टोटल काउंट करिवो 32 बिट्स रहउची दैट इज 4 into 8 8 8 हे केते रहउची ना 4 टा सेक्शन रहउची एग्जाम रे एमिति पढी पारे any IP address contains how many bits or how many bytes bytes हेले कोन कहइबो ना there are 4 bytes bits हेले कोन कहइबो ना 32 bits मने रहिबो तो गाइस मने रहिबो तो एग्जाम रे निहाती पकेबो एम्ति वाला क्वेश्चन टिके ट्विस्ट करिके नेवर गेट हेजिटेट आंसर LAN stands for tell me LAN stands for what LAN stands for what is that local area network is that large automatic network is that long active network is that logical access node yes or no आ जदि एग्जाम रे पढिला एटा न लिखि के आसी तो ताहाले झरना को पूरा पानी रे मिसे देबा हैला झरना को नेकी समुद्र संगे मिसे देबा समस्त मन रख झरना एते बड़ थम देई चंदी so LAN stands for what this is local area network okay guys LAN stands for what local area network what is LAN this is local area network and a LAN is a network that connects multiple computers LAN connects multiple computers suppose amar etu gote office अछि and StudyIQ office रे मे बी गोटे रूम रे 5 टा 10 टा कंप्यूटर अछि so गोटे LAN कनेक्ट करले कोन होला एते सारा कंप्यूटर जते बेले हमें नेटवर्किंग करूछे त हमर नेटवर्क स्लो हबनी LAN कनेक्ट करिया द्वारा कोन होला ना नेटवर्क फास्ट चलिबो so these computers may be in the same room or same building or spread out throughout multiple buildings but same room hela same building रे जते बेला हमें multiple computers use करूचे बेसिकली हमें LAN कनेक्ट करूचे ओके अदरवाइज W LAN कनेक्ट करूचे बिल्डिंग सेपरेट है ओके गाइस नेक्स्ट एंड टुडेस लास्ट क्वेश्चन ओके और टाइम नहीं भाभी थिले 60 टा कवर अप करबा बट हे परिबन ओके सो ए मॉडेम इज यूज्ड टू गाइस टेल मी ए मॉडेम इज यूज्ड टू store files, convert digital signals to analog and vice versa, or protect the network or increase RAM speed. Tell me. A modem is used to what? Like modem कौन and their use कौन? Very good. Very good. Those are giving B. कौन करूची ना convert करूची कहा को digital signals को कोउथिरे ना to analog and vice versa. Like digital signal को analog रे convert करूची again analog को digital signal रे convert करूची. This is the role of modem. Okay guys, let's see some description. So देखंतु एठी रहि हमर कोन PC assembly एठी भी रहि PC. So modem रो काम कोन होची मझिरे रहि कि से modulate करूची digital signals को and demodule करूची पुनी analog signals. So signal को पुनी modulate करके नोची पुनी ताको analog करके नोची okay so this is the basic description okay guys yes module and demodule so how was the class guys all okay so there is another class of me I have to quit now thank you so much thank you class timing होची 11 ru 12 sorry Monday Wednesday and Friday रहउची मोर क्लास बाकी टीचर्स मानकर अलगा डेज भी क्लास ओके Monday Wednesday and Friday रहउची डिफरेंट सेक्शन रहउची जेंति कि कंप्यूटर हेला नेक्स्ट हमर साइंस हबो देन हमर ईवीएस हबो ठीक है डिफरेंट करके रहउची एंड हमर साइंस ईवीएस ए सब हमर बेसिक रू फ्रॉम एनसीईआरटी रा 6th through 12th को हमें कवर अप करूची ओके थैंक यू सो मच जीत भाई तुम टे क्लास रहिबो हला क्लास रहिले मजा लागुची
हाँ नेक्स्ट सेशन 8 ही कंटिन्यू हबो मु नंबर भी चेंज करूनी तो मार्क भी करिथिबो एबे 50 रे छाडिले नेक्स्ट टाइम पुनी 50 रु ही स्टार्ट करिबो ओके थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू एंड जो माने भी वन डे एग्जाम पे इंटरेस्टेड अछंदी प्रगति बैच हमर सॉरी प्रगति नहीं हमर प्रारंभ बैच एंड बाकी सब प्लीज टिके स्टडी आईक्यू ओपीएससी चैनल को जाओ भारी या फिर हमर प्रमोशन लिंक भी जीवो यूट्यूब रे देखिबो एंड बहुत ही कम प्राइस रही छी बैच रे टिके बेसी फंडामेंटल क्लियर करी करी हम टॉपिक वाइज जाउछु सो एटा तो जस्ट माने कोन एमसीक्यू डिस्कशन जेति की पारुछ हमको डिस्क्राइब करूछु बट फंडामेंटल क्लास रे टिके बेसी कांसेप्ट क्लियर होबो ना दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओके थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे गाइस देखा अपन नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू